bags are packed and all ready for the trip, all set. Also, by the way, as Nomi hai, so Nomi ka muhurat was just till 7:45 in the morning today, and we have a 7:50 flight to catch, which means by 5:50 we need to be at the airport. इस चक्कर में हमने नौमी सुबह जल्दी 4:45 right now निपटा लिया, and we're done with the Nomi, we're done with the Jot, and let's see, let's check the bags. We are waiting at the departure gate और हम लोग का मिडल सीट है. So we have received one shield and PPE kits. Yes, and this shield has one mask and one pouches of sanitizer. So let's see how the flight goes. See you guys. फाइनली वी हैव लैंडेड एट देहरादून एयरपोर्ट. अब एयरपोर्ट के वहाँ आप जस्ट राइट एट द एग्जिट यू कैन सी देयर आर कार रेंटल सर्विसेज, एयरपोर्ट टैक्सी रेंटल सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड. ऑल्सो द मोमेंट यू एग्जिट द एयरपोर्ट वहाँ पर टेंट और कैनपीज बनी हुई है जहाँ से आपको एक फॉर्म लेकर फिलअप करना है. बेसिकली इट्स जस्ट योर बेसिक डिटेल्स, नेम, नंबर, ईमेल आईडी एंड योर एड्रेस फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग. Also you have to mention कि आप कहाँ स्टे करने वाले हो इन उत्तराखंड. दिस इज़ फॉर ऑल ट्रैवलर्स जो लोग उत्तराखंड ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम अदर स्टेट्स. ओके, ऑल्सो दे आस्क्ड अस टू कंपल्सरीली टेक अ कोविड टेस्ट बिफोर लीविंग द प्रेमाइसेस, वरना उन लोग हमें प्रेमाइसेस लीव करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे. बट आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड डिस्कशन विद देम stating that we have the Arogya Setu app and it shows that we are safe on the app already, then why do we require to take a COVID test? तो उन्होंने फाइनली हमसे कहा कि ठीक है, आप एक अंडरटेकिंग दे दीजिए ऑन दिस पेपर ये लिख के कि अगर आपको कुछ भी होता है तो यू आर होल सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ एंड द गवर्नमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल. सो ये वाली एक मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है जो आई थॉट आई शुड प्रोवाइड यू. आप ये जो दूसरे टेंट्स देख रहे हैं वहाँ पर कोविड टेस्ट हो रहे थे. ओके गाइस, लुक एट दिस, सच अ pretty place. This is in Rishikesh, na? This is? Yes. My God, can you hear the bird? So cute. Guys, that's the room. Washroom. That's the bed. And that's the bed. Hey guys, so you all were wondering where we are off to, and we are finally in Haridwar. We landed in Dehradun, and so वहाँ से a friend, he dropped us at this place where we could get, those very cute auto rickshaws to come to Haridwar. Okay, so there are two ways how you can get from Dehradun Jolly Grant Airport to Haridwar. एक आप direct cab ले सकते हो, rent a cab from the airport, which will charge you around 1500 rupees, 1200 to 1500 rupees. And if you want another option, what you can do is you can take a cab from
Dehradun Jolly Grant Airport to Rishikesh, which will charge you 800 rupees. And वहाँ से आप ऑटो शेयर ऑटो ले सकते हो basically, wherein you share seat with co-passengers, and the autos are pretty big, not 3-seater. There are I think 6 to 7-seater autos. Easily 7 or 8 people fit into the auto, and that is 40 rupees per seat. So from Rishikesh to Haridwar, you will reach in just 40 rupees per seat. They'll drop you at any place you want. I mean, you can even get down at Har Ki Pauri, or you can get down at Haridwar bus stand. Whatever be it, they charge you 40 rupees per seat. So yeah, that's about it. Stay tuned for more updates, and let's walk the trip to Uttarakhand together. देखते हैं कितना मज़ा आता है इस ट्रिप पर. I am super excited. Also, I'm traveling with my husband and my cousin. So 3 of us together, just the 3 of us together are traveling for the first time. It's normally we're all traveling together as like with family and parents and everyone, but this time it's just the 3 of us. Let's hope for the best, and let's hope for a super amazing travel.